Hello everyone. So today we'll continue with the CAT previous year question series, and this will be the set number 43 from CAT 2020 paper. Now we'll look at the question. Okay. So the question says a high-low game is a four-player game played in 6 rounds. In every round, each player has to bid high or low. Okay. The bids are made simultaneously. If all four players bid high, then all four lose 1 point. If all three players bid high and one bids low, then the players bidding high gain 1 point and the players bidding low lose 3 points. If if two players bid high and two players bid low, then the players bidding high gain 2 points and the players bidding low lose 2 points. And if one player bids high and three players bid low, then the player bidding high gains 3 points and the player bidding low lose 1 point. If all four bid low, then all four gain 1 point. So we have basically four combinations. The first one is high, 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 and high, where all bid high. Then everyone is losing 1 point. The second combination is one is bidding high and the three other are bidding low. Over here, one is gaining +3, and the three who are bidding low are losing one each. And then two are bidding high and two are bidding low. Then the ones bidding high get +2 and the ones bidding low get -2. And then three are bidding high and then one is bidding low. ठीक है? Here, what? The bidding high people get +1 and the one who is bidding low gets -3 and the last is there are five actually. Ki all are bidding low, then everyone gets +1. So these are the five combinations we have. And there are four players A, B, C, D playing the high-low game and the following facts are known. So we have four players playing the high-low game and the high-low game consists of how many rounds? 6 rounds. ठीक है? So at the end of round 3, A has scored 6 points, B has scored 2 points, and B and C have scored -2 points. Okay, so we'll make a table for this where we have four players A, B, C, and D, and then we have 6 rounds R1, R2, R3, R4, R5, R6. ठीक है? उसमें क्या कह रहा है? The first point says that at the end of round 3. That means we can say end 1 is at the end of round 3 that A has 6 points, D has 2 points, and both B and C have -2. ठीक है? At the end of round 6, so after the end of round 6, we can have end number 2. A has 7 points, B and D have scored -1 point each, B and D have -1 each, and C has scored -5. Okay, so we have covered point number 1 and point number 2. Now we know that Deepak's score in the third round was less than his score in the first round, but more than his score in the second round. So let us assume that the round 1, round 2, and round 3 score of Deepak is D1, D2, and D3. So we know that the score he got in third round was less than his score in the first round, but more than that in second. So we know that D1 is greater than D3, which is in turn greater than D2. ठीक है? ये कंडीशन अपने को पता है. So we have covered the third point also. And the fourth point says in exactly 2 points, 2 out of the 6 rounds, Arun was the only player who bid high. So ये वाली condition हो रही थी where A was the only player bidding high in 2 of the 6 rounds. ठीक है? Now we know that D1 is greater than D3 and which is in turn greater than D2 and उनका जो sum आ रहा है that is +2.
So D1 is greater than D2, which is greater, D3, which is greater than D2. So इसमें क्या क्या cases बनेंगे? What all cases we'll have in this condition? First, we'll have D1 as the highest, 3, which is greater than what? D3, 2, which is greater than. Now we have to balance it so that the sum becomes 2. So D2 has to be minus 2. Then only the sum, the sum has to be plus 2, right? So what will be the value of D2? It has to be minus 3. Then only the sum will be equals to what? 2. Because we know that by the end of round 3, D has scored 2 points. Second case is D1 is 3, D3 is 1, and then D2 is how much? Minus 2, because the sum has to be plus 2. This is the second case. And the third case will be that D1 is 2, D3 is how much? 1, and D2 is again minus 1. These are the possible cases. Is there any other case? There's no other case, because let's say एक और चलो केस हो जाएगा. Fourth case will be D1 is 2, but then D3 again has to be less than 2, which can be either minus 1 or minus 2. And if it is minus 1, it even if D2 is minus 2, the sum is not possible to be plus 2. So this case is not possible. So any other case is not possible where D1, D3, and D2 will make a sum of plus 2. So these three cases are possible, such that D1, D3, and D2 will make plus 2 as the sum by the end of round 3. Okay. Now let us assume case number 1. In case number 1, we have D3 as D1 as 3. So in this case, D1 is 3. So if D1 is 3, if D1 is plus 3, what are the other options for the remaining 3 players? If D1 is plus 3, there is only one plus 3 in this set. So the other 3 have to be minus 1. But if A is minus 1 in round 1, can it get to 6 by the end of round 3? Even if it scores the maximum, which is plus 3 in round 2 and round 3, then also it will be plus 5. It won't be able to reach 6. So this case is not possible where D1 is equals to 3, because A cannot be minus 1. And if D1 cannot be 3, then this case is not possible. And even this case is not possible, because in both these cases D1 is equals to 3. So that means कौन सा case हो रहा है इधर? We know that for sure D1 is equals to 2, D3 is equals to 1, and D2 is equals to minus 1. So this is the case which is being played over here. Okay. Now if we know that D1 is equals to 2 plus 2, so what is the options here? That plus 2 सिर्फ एक ही जगह है इस वाले केस में, that this case is being played over here, 2h and 2l. Can A take the value of minus 2? No, because if it takes the value of minus 2, it won't be able to reach plus 6 by the end of round 3. So we know that for sure, if A is taking a value in this case, it will be taking a value of plus 2. And the remaining two minus 2 will be what? B and C. So they will be high, high, and these two will be low, low. इतना अपने को पता चल गया. अब what will be the value for R2? R2 में we know that D1 is equals to minus 1. So if D1 is equals to minus 1, which all case is possible? ठीक है, ये प्लस 2 माइनस 2 है. तो माइनस 1 में कौन से cases हैं?
We know that either this case or this case. If it is first wala case where everyone has bid high, then it will be -1, -1, -1, -1. But again, can A take -1? If it takes -1, so 2 minus 1 is 1. Even if it takes 3 value over here, it won't be able to reach 6. So we know that the first case of H is not possible because A cannot be -1. So which one is the case? यही वाला case होगा, second वाला. And in that A has to be +3, it cannot be -1. So it will be 3 and all other 3 will be -1. So it is what? High, low, low. This is the case. This is the case in the second round. Now let's talk about the third round. ठीक है? थर्ड राउंड की अगर बात करें, D3 is +1. So for +1, what all cases are possible? Either H, or L. Now we know that C is already -3, -2 and -1. It has to reach -2. So it has to be +1 over here. Again, B is also -3. It has to be +1 over here. So if it has to be +1 and जो A है वो it is at 5. By the end of round 6, it is 6. So it also has to be +1. So which of the case has all the values as +1? The LL case. So we know that all have bid low in this round. It is low, 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 and low, and all are +1. ठीक है? ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है. So we have figured out that what are the values in the first 3 rounds. ठीक है? अब आगे की values निकालते हैं. How will we figure out the next three values for the next 3 rounds? इसमें तो हमें D की values पता थी जिससे हमने बाकी values निकाल दी. But in this next 3 rounds, we don't know the individual value of any round. But in the fourth statement, it says that in exactly 2 of the 6 rounds, A was the only player who bid high. So one round in which A was the only player where he bid high was round 2, क्योंकि round 2 में सिर्फ A ने ही high किया, बाकी तीनों ने low किया है. ठीक है, this was also low. So there has to be one more round where A is bidding high. So let us assume that it is R4 for now. It can be any of the R4, R5 and R6. But let us assume it is R4. So +3 high, -1 low, -1 low and -1 low. ठीक है. So ये कितना हो गया? ये 9 हो चुका है. हाँ. अब अगर ये 9 हो चुका है, then it has to come to 7 by the end of round 6. So it has -2 needs to be there in 9. Here it is -3. From -3, it needs to come to -1. So here it needs to take 2 plus 2. Again, it's -3 for C. It needs to come to -5. Here again, it needs to take -2. ठीक है? And for D, it's at 1. 2 minus 1, 1. It needs to come to -1. So it needs to take -2 more. ये सब वैल्यूज हैं जो R5 एंड R6 से आएंगी. ठीक है. अब फर्दर कैसे करेंगे इसको? R5 और R6 में क्या होगा? नाउ अगर हम A को देखें, इसको -2 करना है in the next 2 rounds, because right now it is at +9. It needs to come at +7. So it needs to reduce its value by 2. So what are the possibilities for A to reduce the value by 2? Case 1 is that -3 + 1. This is case 1. इससे 2 की वैल्यू गिर जाएगी. Case 2 is what? Case 2 is -1, -1. Is there any other case possible?
कि एक तो -3 और एक +1 हो, और एक हो दोनों -1। केस 3, -2 अगर उसने एक बार में ही ले लिया, दूसरे वाला 0 तो इज नॉट पॉसिबल, सो दिस केस 3 इज नॉट पॉसिबल। इज देयर एनी अदर केस विच इज पॉसिबल? +3 लेके तो ये कहीं पे भी नहीं जा पाएगा, +2 लेके भी नहीं जा पाएगा बिकॉज -4 इज नॉट देयर, +1 लेके इट नीड्स टू टेक -3, सो इट विल बी केस 1, दीज आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, बिकॉज हमें राउंड ये नहीं पता है कि कौन से राउंड में कौन सा आ रहा है, मे बी ये +1 राउंड 5 में हो, +1 राउंड 6 में हो, बट एक +1 होगा, एक -3 होगा। अगेन दीज -1 तो चलो ये तो दोनों सेम ही है, तो इंटरचेंजेबल होके भी सेम ही आएगा। हाँ, तो -2 कर हो नहीं सकता, -1 -3 के हमने केस ले लिए, 0 पॉसिबल नहीं है, +1 हो नहीं सकता है, +1 हो सकता है, चलो ये वाला केस हो ही गया, +2 हो नहीं सकता, +3 नहीं हो सकता है, सो दीज टू आर द ओनली केस पॉसिबल सच दैट ए कैन रिड्यूस टू। नाउ लेट अस अज्यूम पहला वाला केस। ठीक है, वेयर ए, केस 1 को लेते हैं, वेयर ए इज -3 इन R5। इफ k is -3, then remaining it will be this case. The remaining 3 has to be +1, +1, +1, +1। ठीक है, एंड दूसरे वाले में इट हैज टू बी +1 इधर। अब अगर ये +1 है, तो ये ए ने तो मीट कर लिया अपना क्राइटेरिया -2 का। अगर हम इधर देखें, अगर सी को भी बी को अपना मीट करना है क्राइटेरिया, तो बी कितना हो जाएगा? +1, क्योंकि उसको +2 करना था, +1 उसको यहाँ से मिल गया, +1 उसको यहाँ से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -3, क्योंकि इसको -2 करना था, इसको +1 मिला है, इसको -3 और करना पड़ेगा। अगेन दिस ऑल्सो हैज टू बी -3, बिकॉज इसको -2 टोटल चाहिए था, इसको यहाँ से +1 हो गया तो -3। So -3, -3, +1, +1, is there any configuration possible where two are getting -3 and two are getting +1? No, this configuration is not possible. ये वाली configuration is not possible. So we know that this case is not possible, case number 1. So it will be case number 2. Case number 2 में क्या हो रहा है? In case number 2, A is having -1 and -1, तो इसका -2 हो गया। अगर इसका -1 है, ठीक है, तो कौन सा केस पॉसिबल होगा? या फिर तो ये वाला, या फिर ये वाला। ठीक है, अगर ये वाला है, फर्स्ट वाला, तो उसमें क्या है? 3 का -1 है, 1 का +3 है, एच वाले का। सो वी कैन अज्यूम कि जो +3 है वो किसका होगा? अगर +2 इसको चाहिए, तो वी कैन गिव +3 टू बी फॉर नाउ, एंड दोनों को, बाकी दोनों को -1 -1 दे दिया। क्योंकि अगर एनीवे हम बी सी को अगर +3 दे देते, तो इट कैन नॉट कम टू -2 बाई द एंड ऑफ R6, बिकॉज -2 आने के लिए इसको -5 करना पड़ेगा इन दोनों को अगले राउंड में। सो बी और सी और डी तो +3 हो ही नहीं सकते, बिकॉज -5 इज नॉट पॉसिबल। सो द +3 हैज टू गो टू बी। ठीक है, एंड दीज बोथ विल बी व्हाट? -1 and -1. Now to balance the amount, if it was +2 and we have given +3 to it, we need to reduce it by 1, it will be -1, and then it is -1, it needs to come to -2, then it will have -1 again, and similarly it will have -1 again. So is this configuration possible, all -1? Yes, this is possible. So we know that it will be case 2, where A will have -1 and -1 in both the next rounds. तो इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गई? लो, हाई, हाई एंड हाई। ठीक है, एंड नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? सबका -1 है, तो एवरीवन इज हाई। ठीक है, ये होगा कॉन्फ़िगरेशन। वी वी आर नॉट श्योर येट, जैसे कि डी की वजह से, बिकॉज वी न्यू D1, D2 एंड D3, वी न्यू कि पहले की
तीन राउंड्स में एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशंस हर एक की क्या है. इन द नेक्स्ट 4 राउंड्स वी नो दैट ए का +3 -1 -1 होगा, बट वो कौन से राउंड में होगा, ये +3 उसका R4 में होगा, R5 में होगा या R6 में होगा, ये हमें नहीं पता है. एंड सिमिलरली फॉर रेस्ट, हमें हमें पता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहेगा, +3 -1 -1 -3 +3 -1 +3 -1 ऐसा रहेगा. बट कौन से राउंड में क्या आएगा, R4 R5 R6 में, ये अपने को नहीं पता है. ठीक है. सो कमिंग टू द क्वेश्चंस नाउ. द क्वेश्चन, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज, और हमारी ये फोर्थ स्टेटमेंट भी बाय द वे मीट हो गई है. इन एग्जैक्टली 2 राउंड्स ए इज द ओनली प्लेयर टू बिड हाई. विच राउंड्स R2. एंड सेकंड राउंड कौन सा है, वेयर ही इज बिडिंग हाई. सेकंड राउंड हमने अभी R4 माना है. इट कैन बी एनी राउंड, but it can be for now we have shown it in R4, but it can be R5 also, R6 also. For sure we know that it is in R2. ठीक है, एक श्योर ये है, दूसरा इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. So now coming to the question, what were the bits of A, B, C and D respectively in the first round? So round वन की अगर बात कर रहे हैं तो A B C D की कितनी थी, हाई हाई लो लो हाई. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो गया हाई लो लो हाई वाला, ऑप्शन नंबर सी. तो इसका हमने कर लिया ये वाला आंसर. ऑप्शन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन हाउ मेनी राउंड्स अरुण बिड हाई. अरुण ने कितने राउंड्स में हाई बिड किया है. उसने एक तो राउंड वन में हाई बिड किया है, राउंड टू में हाई बिड किया है, राउंड फोर में हाई बिड किया है एंड राउंड सिक्स में हाई बिड किया है. तो कितना होगा, एक, दो, तीन एंड चार. तो अरुण ने टोटल 4 राउंड्स में हाई बिड किया है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 4. ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया हमने. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इन हाउ मेनी राउंड्स डिड बी बिड लो. हाउ मेनी राउंड्स डिड बी बिड लो. एक तो ये वाला राउंड हो गया, एक, देन दो, देन तीन, देन चार. वी नो दैट इन 4 राउंड्स बी बिड लो. तो इसका आंसर भी कितना हो गया, 4. ये वाला भी कर लिया हमने. नाउ द 10th क्वेश्चन सेज, इन हाउ मेनी राउंड्स डिड ऑल द प्लेयर्स मेक आइडेंटिकल बिट्स. सो कौन से राउंड्स हैं जिनमें आइडेंटिकल बिट्स लिए. इसमें तो हाई लो लो हाई है, इसमें हाई लो 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 है. अगर राउंड थ्री देखें तो सबका लो 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 है. तो एक तो राउंड थ्री हो गया, R3. एंड देन R4 में भी हाई लो 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 है. देन R5 में भी लो हाई 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 है. एक R6 हो गया जिसमें सबका हाई है. तो R3 और R6 ऐसे 2 राउंड हैं जिनमें सब प्लेयर्स ने सेम बिट किए. R3 में सबने लो डाला है, R6 में सबने हाई डाला है. सो ऐसे 2 राउंड्स हैं जिसमें ऑल द फ्लोर 4 प्लेयर्स मेड द आइडेंटिकल बिट. ठीक है, ये भी हो गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी राउंड्स डिड दीपक गेन एग्जैक्टली 1 पॉइंट. ओके सॉरी, ओके सॉरी, जस्ट अ मिनट. हाँ. सो इन हाउ मेनी राउंड्स डिड दीपक गेन एग्जैक्टली 1 पॉइंट. सो उसका 1 पॉइंट कितने राउंड्स में आया है. इफ यू सी, दीपक ने एक तो राउंड थ्री में उसने 1 पॉइंट गेन किया है. राउंड वन में उसने 2 पॉइंट्स गेन किए हैं. राउंड टू में उसने -1 पॉइंट किया है. राउंड थ्री में +1, राउंड फोर में -1, राउंड फाइव -1 एंड देन अगेन राउंड सिक्स इज -1. So there is only one round where Deepak is gaining 1 point. तो इसका आंसर क्या हो गया, 1. In only one round, he gained exactly 1 point. Then our last question says, in which of the following rounds was A definitely the only player to bid high? हमने बात की थी ये, ए ने 2 राउंड्स में बिड हाई किया है. एक तो R2 है फॉर श्योर, और एक इन थ्री में से कोई एक है, R4 R5 एंड R6 में से कोई एक है. बट जो हमें फॉर श्योर डेफिनेटली है कि उसने कौन से राउंड में किया, वो कौन सा है, R2. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो गया, इन राउंड टू फॉर श्योर ही बिड, ही वॉज द ओनली प्लेयर हु बिड हाई.
ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। तो प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। So I hope the set was clear to everyone. So for any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.